हेलो एवरीवन वेलकम टू CHSE कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पिलाने समस्त मो वॉइस क्लियर आछि कि यदि क्लियर आछि त यस कहि दियो। क्लास स्टार्ट करिवे कि हो ठीक अछि। देखो आमे किछटा इंपोर्टेंट डिफरेंशिएट क्वेश्चन देथिले आ किछटा शॉर्ट नोट डिस्कशन करथिले जो सब सिलेक्टेड 2 मार्क 3 मार्क रे आसीबो। मु आज कोन करछि आज हमर डिफरेंशिएट क्वेश्चन किछटा डिस्कशन कर दोछि 20 टा पाखा पाखी काली की सब शॉर्ट नोट रखिबा डिस्कशन पई लॉन्ग क्वेश्चन तो मु प्रोवाइड कराई जाइछि आउ तमे ऑब्जेक्टिव को भलसे पढुता आ हमर काली रे कोन डिस्कशन करबा हमर शॉर्ट नोट डिस्कशन करबा आज डिफरेंशिएट क्वेश्चन डिस्कशन करबा आउ परीक्षा पूर्व एमसीक्यू आ एब्रिविएशन जतक सेतक सब डिस्कशन करबा बुझला। एति क्वेश्चन पढ़ो जेति 2 मार्क 3 मार्क जो 60 टी देछि से 60 टी भलसे पढ़ो आराम में बढ़िया मार्क रहबो पिला माने जहां 2 मार्क 3 मार्क क्वेश्चन आसो तार भीतर आसो ता बाहर कुछ आसो ना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन हब एंड स्विच कोन हब और स्विच कोन गोटे गोटे नेटवर्किंग डिवाइस माने कोन गोटे गोटे नेटवर्किंग डिवाइस। देखो हब वर्स ऑन फिजिकल लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल स्विच वर्स ऑन डाटा लिंक लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल मींस ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल कोन ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ओएसआई मॉडल विभिन्न प्रकार ओएसआई मॉडल लेयर अछि हमें डिफरेंशिएट क्वेश्चन में केमते लिखिबा हब वर्सन फिजिकल लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल स्विच वर्सन डाटा लिंक लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। इट इज ए ब्रॉडकास्ट डिवाइस इट इज ए मल्टीकास्ट डिवाइस पिलाने बहुत सहज पॉइंट लिखाई छि जहा द्वारा तमरा मन रहि जिवो बहुत इजीली मन रहि जिवो। देखो हब वर्सन फिजिकल लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल स्विच वर्सन डाटा लिंक लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। इट इज ए ब्रॉडकास्ट डिवाइस इट इज ए मल्टीकास्ट डिवाइस तबरे इट सेंड डाटा इन फॉर्म्स ऑफ बाइनरी बिट्स स्विच सेंड्स डाटा इन फॉर्म्स ऑफ फ्रेम्स। ये कोन करे बाइनरी बिट्स आकार डाटा पठाए ये केमती डाटा पठाए फ्रेम आकार डाटा पठाए एट ए टाइम ओनली वन डिवाइस कैन सेंड डाटा गोटे समय केवल गोटे डिवाइस डाटा पठाई परिबो एतर कोन मल्टीपल डिवाइस कैन सेंड डाटा इन सेम टाइम माने मल्टीपल डिवाइस गोटे समय रे डाटा एका संगे पठाई परिबे। इट वर्क्स इन हाफ डुप्लेक्स इट वर्क्स इन फुल डुप्लेक्स ये कोड रे काम करे हाफ डुप्लेक्स रे काम करे ये फुल डुप्लेक्स रे काम करे। हमर तीनटा मोड अछि ट्रांसमिशन मोड गोटे अछि सिंप्लेक्स हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स ये हाफ डुप्लेक्स रे काम करे ये फुल डुप्लेक्स रे काम करे। इट डज नॉट सेंड ए स्टोर इन आईपी एड्रेस मैक एड्रेस इट स्टोर ओनली मैक एड्रेस ये कौन से आईपी एड्रेस की मैक एड्रेस स्टोर करनी ये ओनली मैक एड्रेस स्टोर करे बुझला। पले 3 मार्क पे मिनिमम 6 टा पॉइंट लिखिबो 2 मार्क पे मिनिमम 4 टी पॉइंट लिखिबो हमर डिफरेंशिएट क्वेश्चन आसीले बुझि पल्लो। हां आईटी रा आगे एग्जाम सरी गेले बायोलॉजी डिस्कशन करबा स्टार्ट करबा। प्लान जानि पेलो हब वर्सन फिजिकल लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल स्विच वर्सन डाटा लिंक लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। इट इज ए ब्रॉडकास्ट डिवाइस इट इज ए मल्टीकास्ट डिवाइस हब सेंड्स डाटा इन फॉर्म्स ऑफ बाइनरी बिट्स स्विच सेंड डाटा इन फॉर्म्स ऑफ फ्रेम्स एट ए टाइम ओनली वन डिवाइस कैन सेंड डाटा एतर कोन मल्टीपल डिवाइस कैन सेंड डाटा इन सेम टाइम बुझला। इट वर्क्स इन हाफ डुप्लेक्स इट वर्क्स इन फुल डुप्लेक्स तापर कोन इट डज नॉट स्टोर इन आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस इट स्टोर ओनली मैक एड्रेस ये कोन करे केवल मैक एड्रेस स्टोर करे। तापर आसिला हमरो डिफरेंस बिटवीन LAN एंड MAN बोलसे देखो पिला माने इट स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क इट स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फर्स्ट सर फुल फॉर्म लिखि दबो इट इज ए कंप्यूटर नेटवर्क यूज्ड टू कनेक्ट कोन कनेक्ट करे पे डिवाइस इन ए लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया दैट मींस स्कूल कॉलेज बिल्डिंग काना LAN रो होची हमरो रेंज केते 10 किलोमीटर बट प्रैक्टिकली 1 किलोमीटर बुझ बेलडी सेति में कोन स्कूल कॉलेज लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया कि यार कोन it is a large computer network that spreads over a city or metropolitan बड़ बड़ शहर माने करे जोटा कनेक्ट करे सेटा हला मैन। तापर कोन इट रेंजेस अप टू 10 किलोमीटर बट प्रैक्टिकली 1 किलोमीटर किंतु आर रेंज कोन इट रेंजेस अप टू 100 किलोमीटर। तापर आर डाटा ट्रांसमिशन स्पीड हाई आर डाटा ट्रांसमिशन स्पीड एटा मॉडरेट लिखियो पिला माने मैन एम फॉर मॉडरेट डाटा ट्रांसमिशन स्पीड मॉडरेट। error cannot be handled then को error can be handled
नेटवर्किंग कॉस्ट इज इनएक्सपेंसिव, नेटवर्किंग कॉस्ट इज एक्सपेंसिव। तुम पिला माने जदी गोटिए पट भलसे मन रखुछ आर पट तुम ऑटोमेटिक भले लिख परिबो। आ यार आंसर मु सब टेलीग्राम रे अपलोड कर देबी, तमे सेतरु जाई कि नोट बनै दबो। एबे खाली भलसे बुझी जाओ, मन रहि जिवो संग संगे। तमे जते सुनिबो गोटे जिंस को बारंबार सुनिले सेटा मन रहि जिवो। कोन एस स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया, इट स्प्रेड्स ओवर सिटी मेट्रोपॉलिटन। तब यार रेंजेस होची 10 किलोमीटर बट प्रैक्टिकली 1 किलोमीटर, यार रेंजेस होची 100 किलोमीटर। आर डाटा ट्रांसमिशन स्पीड हाई, आर डाटा ट्रांसमिशन स्पीड मॉडरेट। यार एरर कैन नॉट बी हैंडल, यार एरर कैन बी हैंडल। नेटवर्किंग कॉस्ट इज इनएक्सपेंसिव, नेटवर्किंग कॉस्ट इज एक्सपेंसिव। बुझिला? तापरे नेक्स्ट देखो गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया माने वेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया माने वेयरलेस मीडिया। बुझिबेलो? परीक्षा जदी वेड वेयरलेस पड़थबो छाड़ दे आसीबनी। बुझिबेलो? गाइडेड मीडिया जहा वेड मीडिया से, अनगाइडेड मीडिया जहा वेयरलेस मीडिया से। पीडीएफ आज टेलीग्राम रे अपलोड कर देबी पिला माने, सेतरु जाई कि नोट कर दबो। एबे भलसे बुझिया को चेष्टा करो, सब जिंस को बुझा को गोटे गोटे की पॉइंट बुझो, तबे टेलीग्राम रे नोट्स दे देबी, आराम रे जाई कि ताको भलसे पढियो। देखो द गाइडेड मीडिया इज कॉल्ड वेयर्ड कम्युनिकेशन और बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया। गाइडेड मीडिया कोन को जाय? वेयर कम्युनिकेशन बा बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया। वो अनगाइडेड मीडिया कोन को जाय? वेयरलेस कम्युनिकेशन बा अनबाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया। बुझिला? तापरे द सिग्नल एनर्जी प्रोपागेट्स थ्रू वेयर इन गाइडेड मीडिया। एतर वेयर रे हेले एतर कोन एयर रे हबो। बुझबछ ना? बुझबनो? गाइडेड मीडिया माने वेयर्ड मीडिया, त माने वेयर माध्यम रे हबो। अनगाइडेड मीडिया माने वेयरलेस, जोतर तार नाही, त माने कोन एयर मीडियम रे हबो। इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, इट इज एक्सपेंसिव। The signals are in the form of a voltage, current or photon in the guided media. एतर सिग्नल केन थांती? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आकारे थांती। एतर केमि थांती? वोल्टेज, करंट बा फोटोन आकारे थांती। एतर केमि थांती? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आकारे थांती। तबरे इट इज अनेबल टू पास थ्रू वॉल्स, आकु वॉल द्वारा पास करबोनी। इट कैन पास थ्रू वॉल्स, जे जेटा एयर मीडियम रे चार्टेड जाय परबो। यार एग्जांपल दे दबो ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिक फाइबर केबल। आर एग्जांपल होला माइक्रोवेव, रेडियो लिंक, इंफ्रारेड। एतर गोटे इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव डिस्कशन कर दोछु पिला माने। ऑप्टिक फाइबर केबल यूजेस लाइट सिग्नल फॉर डाटा ट्रांसमिशन। कोन करे? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कोड रे कन्वर्ट करे, लाइट सिग्नल रे कन्वर्ट करे डाटा ट्रांसमिशन। इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नु जिबा। देखो तब आसला डायल अप कनेक्शन, ब्रॉडबैंड कनेक्शन। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जदि पिला माने देखो तुम जदि डिफरेंशिएट क्वेश्चन को भलो से प्रैक्टिस करछो, जदि ता बदल रे तोर एठी डायल अप कनेक्शन पड़छि, ब्रॉडबैंड कनेक्शन रा डिफरेंशिएट पड़छि। किंतु परीक्षा रे तमरा आछि व्हाट इज ब्रॉडबैंड कनेक्शन बा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ब्रॉडबैंड कनेक्शन। तमे डिफरेंशिएट पड़छ आराम रे शॉर्ट नोट लिख परबो, किछ असुविधा होबनी। देखो इन डायल अप कनेक्शन द सर्विस कनेक्ट टू द इंटरनेट थ्रू ए फोन लाइन कनेक्शन। एतरे कोन हबो? It is a high speed connection that allows using the telephone and internet simultaneously। माने टेलीफोन और इंटरनेट को simultaneously means एका संगे व्यवहार करथबो। एतरा कोन? कनेक्ट टू द इंटरनेट थ्रू ए फोन लाइन कनेक्शन। कोतरे? फोन लाइन कनेक्शन द्वारा। इट इज ए स्लो स्पीड कनेक्शन, इट इज ए हाई स्पीड कनेक्शन। बहुत सहज पॉइंट पिला माने कोटे पट मन रखिबे, आर पट ऑटोमेटिक मन रहि जिवो। इट यूजेस एनालॉग ट्रांसमिशन फॉर डाटा ट्रांसफर। केटा कोन हबो? एनालॉग रो ऑपोजिट कोन? डिजिटल। It uses digital transmission for data transfer. It is slower than broadband connection. It is faster than dial-up connection. तापरे it is not reliable. It is more reliable. It is less expensive than broadband connection. It is more expensive than dial-up connection. यार ऑपोजिट टा होची ब्रॉडबैंड कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन न कोन? ऑपोजिट टा होची ब्रॉडबैंड कनेक्शन। तनो गोटे पट तुम जदी भलसे मन रखि दो, आरा पट मन को लिखि दे परिबो। तापर आसला वेब पेज, वेबसाइट। देखो पिला माने वेब पेज कोन, वेबसाइट कोन? जदी वेब पेज आ वेबसाइट रो शॉर्ट नोट पडियो परीक्षा लिखि परिबो, कारण तुम डिफरेंस रे पडिचो, शॉर्ट नोट रे पडला आराम रे लिखि परिबो। इट इज ए वेब डॉक्यूमेंट डिस्प्ले इन वेब ब्राउजर। एटा कोन? इट इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेज दैट हाइपरलिंक विथ ईच अदर। ये कोन? कलेक्शन ऑफ वेब पेज रो कलेक्शन जेमति केमति हेतांती हाइपरलिंक ही परस्पर सहित थांती। एतरे कोन? एटा जो गोटे वेब डॉक्यूमेंट जोटा डिस्प्ले होय को एतरे वेब ब्राउजर रे। इट कंसिस्ट ऑफ कंटेंट रिगार्डिंग सिंगल एंटिटी। ये सिंगल एंटिटी की नहीं होता है, ये मल्टीपल एंटिटी जेटा कर दो, मल्टीपल एंटिटीज को लेके होता है। कौन होता है? मल्टीपल एंटिटीज के लेके होता है। यूआरएल डॉक्यूमेंट और वेबसाइट कैन बी यूज्ड टू एक्सेस इट। गोटे यूआरएल डॉक्यूमेंट, यूआरएल माने
यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर डॉक्यूमेंट बा वेबसाइट दरकार करे एक्सेस करिया पे ये कोन करे गोटे डोमेन एड्रेस दरकार करे कोन करिया पे एक्सेस करिया पे इट टेक्स लेस टाइम टू डेवलप इट टेक्स मोर टाइम टू डेवलप बुझला तापर यार एग्जांपल होची hello.html यार एग्जांपल होची www.google.com वेबसाइट केमते लिखाबे www. आकर लिखाबे बुझि पेले पिला माने देखो तापर आसला फिशिंग को चैप्टर पिला माने नेटवर्क सिक्योरिटी जो हमर साइबर क्राइम जो चैप्टर ता सेही चैप्टर इट इज एन ऑटोमेटेड अटैक इट इज ए मैनुअल अटैक फिशिंग इज टारगेटेड फॉर ए वाइड रेंज ऑफ पीपल थ्रू ईमेल केमिति फिशिंग को केमिति टारगेट कराए फॉर द वाइड रेंज माने लार्ज रेंज ऑफ पीपल थ्रू ईमेल माध्यम रे एतर कम हुए एतर देखो एतर कौन हुए फिशिंग इज टारगेटेड फॉर ए वाइड रेंज ऑफ पीपल थ्रू वॉइस कम्युनिकेशन एतर कोन वॉइस कम्युनिकेशन माध्यम रे एतर केमिति हुए ईमेल माध्यम रे तापर असला इट हैज मोर एक्यूरेसी इट हैज लेस एक्यूरेसी बुझला इट इज मोर यूज्ड नाउअडेज वर्तमान दिन रे एटा बहुत मात्रा व्यवहार होची इट वाज मोस्टली यूज्ड इन अर्लियर डेज बट स्टिल अटैकर यूजेज वर्तमान कोन अटैकर माने को यूज करछंती ए सिंगल अटैकर कैन सेंड वेरियस ईमेल्स एट ए टाइम गोटे सिंगल अटैकर कोन करे वेरियस ईमेल एका संगे पठै पारे एपड कोन वॉइस कॉलिंग टू टारगेट कैन बी डन बाय अटैकर ऑन ए टाइम बा गिवन टाइम तापर डिफरेंस बिटवीन आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस IP address कौन है स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इट स्टैंड्स फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल बुझला तो इट इज ए लॉजिकल एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर इट इज ए फिजिकल एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर बुझला पिला माने ओटला लॉजिकल आ ओटा कोन फिजिकल तापर असला IP address operates the network layer of voice model एटा कोन लेयर रे काम करे नेटवर्क लेयर रे काम करे एटा कोन लेयर रे काम करे डाटा लिंक लेयर रे काम करे धन्यवाद अर्चिता प्लेन 17 को नोट करिया बहुत कष्ट बहुत गुडे क्वेश्चन को तार आंसर निजे लिखिबा ताको प्रिंट आउट करिक बाहर करिया बहुत कष्ट पिला माने आको बहुत परिश्रम करिया पड़ची कारण तुम मानकर याको जदि पॉइंट ठीक ठाक न लिखिबो परीक्षा रे आईटी रे भलो मार्क देबे नहीं डिटेल्स लिखे पड़े आईटी रे तेनो याको विभिन्न प्रकार सैंपल पेपर विभिन्न प्रकार ऑथर रो बुक जंती भिके हो हमर एबीसी हो आ ब्यूरो हो मिसे की नोट करिया बहुत कष्ट पिला माने तेनो तुम भल से प्रैक्टिस करो रिजल्ट कर देले हम परिश्रम रो मूल्य हमको मिल जिवो तुम भल से प्रैक्टिस करो आ भलो रिजल्ट करो आईटी रे पिला माने हम परिश्रम मूल्य हमको मिल जिवो देखो इट इज प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट सर्विस provider internet service provider मान कोन ISP तबरे it is provided by computer manufacturer the length of IPv4 is 32 bit एतरा length of MSC address is 48 bit IP address can be found by third party MAC address cannot be found by third party बहुत सहज लैंग्वेज यूज कराई छी पीडीएफ टेलीग्राम रे जॉइन हे जिबा आज पीडीएफ अपलोड हे जिबा तुम सेतु नोट कर दबो मैं खाली बुझौची डिस्कशन कर दोची तमटे मन होई जिवो तमे तापरे हमर को टेलीग्राम रो डाउनलोड करी पड़िबो आईपी एड्रेस इज नॉट मैक एड्रेस इज ऑलवेज फाउंड तापरे आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई द कनेक्शन ऑफ द डिवाइस ऑन द नेटवर्क मैक एड्रेस हेल्प्स इन सिंपली आइडेंटिफाई द डिवाइस तापरे एआरपी प्रोटोकॉल कैन बी retrieve the MAC address of device RARP protocol can be retrieve the IP address of device बुझला तापर असला HTML DHTML पिला माने HTML DHTML HTML XML और स्टैटिक डायनामिक वेब पेज ए तीनटा भितर गोटे 3 मार्किया कंपलसरी परीक्षा रे आसीबो आइदर HTML DHTML नले HTML XML मदन नहले स्टैटिक एंड डायनामिक वेब पेज ए डिफरेंस गोटे आसे परीक्षा रे जेमिते देखो it stands for hypertext markup language it stands for dynamic hypertext markup language it consists of simple HTML tags it consists of HTML tags CSS and JavaScript এটা in কাটি দেব কেবল CSS and JavaScript it is used to create static web page it is used to create dynamic web page it is simple or less interactive it is complex or कौन इंटरेक्टिव देखो बहुत इजी लिखाई छी इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल एचटीएमएल टैग ये सिंपल एचटीएमएल को टैग को नहीं रही छी इट कंसिस्ट ऑफ एचटीएमएल टैग सीएसएस जावास्क्रिप्ट को नहीं रही छी इट इज यूज्ड टू क्रिएट स्टैटिक वेब पेज इट इज यूज्ड टू क्रिएट डायनामिक वेब पेज तब इट इज सिंपल अपोजिट कौन कॉम्प्लेक्स
less interactive opposite कौन interactive error cannot be handled error can be handled तापर events cannot be used events can be used in कौन लिखिबो events cannot be used in html तापर कौन लिखिबो events can be used in html बुझला ठीक अछि नेक्स्ट आसला स्टैटिक वेब पेज डायनामिक वेब पेज भलो पिला मन देखो it is simple in terms of complexity तुलना रे स्टैटिक वेब पेज होची सिंपल आ डायनामिक वेब पेज होची इट इज कॉम्प्लिकेटेड ए माने कोन होचंदी कॉम्प्लिकेटेड बुझिला पिला माने तापर इट टेक्स लेस टाइम फॉर लोडिंग ये कोन करे कम समय रिक्वायर करे कोन पे लोडिंग करिया पे it requires but takes more time for loading in static web page database is not used etra database use हुएनी in dynamic web page database is used in static web page information are changed in dynamic web page information are changed frequently etra information are changed rarely epot habo information are changed frequently it requires less work it requires more work बोला एटा पिला मन हमर कोन स्टैटिक और डायनामिक वेब पेज तापर आसला पिला माने HTML एंड XML वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन HTML और XML एटा प्राय परीक्षा आछि देखो it stands for hypertext markup language it stands for extended markup language पिला माने क्लास सरिले मु इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन तुम कहि देबी केमति कम प्रिपेयर हबो तापर आसला it consists of a predefined tag it does not consist of predefined tag तापर it is not case sensitive it is a case sensitive it is not a strict language it is a strict language it has a .html extension dot चिन्ह दबो it has .xml extension कोना .html extension .xml extension बुझला तापर it display data it carry data बुझला तापर असला स्विच और रोटर भितर डिफरेंस कोन स्विच गोटे नेटवर्किंग डिवाइस रोटर भी गोटे नेटवर्किंग डिवाइस it works in data link layer of OSI model it works in network layer of OSI model it is a multicast device तापर it is a routing device used to create route for transmitting data packet को transmit करिया पे कोन यूज है रोटर यूज है बुझला it send data in forms of frames in set data in forms of packet ये packet आकार डाटा पठाए ये फ्रेम आकार डाटा पठाए it is used in LANs it is used in LAN MAN 1 it operates at OSI layer 2 it operates at OSI layer 3 it is restricted to wired network connection it works in wired and wireless माने एटा केवल गाइडेड मीडिया रे काम करे ये बहुत गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया रे काम करे तापरे इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू wired नेट एटा गला तापरे इट स्टोर्स एंड यूजेस मैक एड्रेस ऑफ ए डिवाइस टू ट्रांसफर डाटा ये मैक एड्रेस यूज करे डाटा पठिया पई ये आईपी एड्रेस यूज करे डाटा ट्रांसफर करिया पई बुझला येला स्विच और रोटर भीतर डिफरेंस तापर असला इंफ्रारेड ब्लूटूथ इंफ्रारेड कोन इंफ्रारेड इज इंटेंडेड फॉर डाटा कम्युनिकेशन एटा कोन डाटा एंड वॉइस कम्युनिकेशन बोथ एतरे ओनली डाटा कम्युनिकेशन एतरे डाटा एंड वॉइस कम्युनिकेशन तापर पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन एटा हो गोटे पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन एटा हो पॉइंट टू मल्टी पॉइंट ट्रांसमिशन it cannot be penetrate solid object ये solid object को penetrate माने अतिक्रम करि परनी it can penetrate solid object ये अतिक्रम करि पारे radio frequency interference ये may have radio frequency interference it is span very short distance range up to 5 meter range हो 5 meter और range हो 10 meter बुझिला तापर आसला http ftp ऑफिशियल नित्य लॉन्ग क्वेश्चन ए बिजनेस मु लास्ट को टोटल सब डिस्कशन कर देबी लॉन्ग क्वेश्चन कोटा कोटा परीक्षा पे प्रिपेयर होबो बेस्ट होने पिला माने आ सातटी क्वेश्चन रहला मु डिस्कशन कर दे तापर मु लास्ट को लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन करबे देखो http ftp भीतर डिफरेंस कोन it stands for hypertext transfer protocol it stands for file transfer protocol it is a one way system it is a two way system देखो एतरे कोन ट्रांसफर हुए वेब पेज एचटीएमएल पेजेस ट्रांसफर हुए गोटे कंप्यूटर आ गोटे कंप्यूटर को एतरे कोन हुए फाइल ट्रांसफर हुए गोटे कंप्यूटर आ गोटे कंप्यूटर को
এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট অবজেক্টিভ পিলা মানে এতরে কোন ট্রান্সফার हुए वेब पेज বা HTML पेजेस ए सब ट्रांसफर हुए एतरे कोन हुए फाइल ट्रांसफर हुए गोटे कंप्यूटर रो आउट कंप्यूटर को ए वेब सर्वर व्हिच स्टोर्स द ऑल द वेब डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड HTTP सर्वर सिंधी ए सर्वर कंप्यूटर दैट स्टोर्स ऑल द फाइल्स जे ऑल द फाइल्स को स्टोर करे सेला कोन FTP सर्वर इट रिक्वायर्स ए स्पेसिफिक यूजर नेम और पासवर्ड फॉर एक्सेस ये एक्सेस होगा पे कोन गोटे स्पेसिफिक यूजर नेम और पासवर्ड दरकार करे ये कोन इट यूजेस ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल तापर असला JDBC ODBC एटा पिला माने JDBC पढले भी तमे जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी लिखिबो आर फुल फॉर्म हला जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी आर फुल फॉर्म ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय Sun Microsystem in 1997 it is introduced by Microsoft in 1992 we can use JDBC only for Java language आमे केवल Java language पई कोन JDBC यूज करू कोन Java database connectivity ना एतर कोन we can use ODBC for any language C C++ Java इस सब गोटे पिला माने गोटे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बुझ पाइलो तो ये जो Java C C++ HTML SQL ये सब होची प्रोग्रामिंग Python ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एतर केवल Java लैंग्वेज यूज हुए एतर कोन C++ Java विभिन्न प्रकार लैंग्वेज यूज हुए we can use JDBC on only any platform आमे कोनोसी प्लेटफॉर्म रे भी व्यवहार कर परबे JDBC को we can use ODBC only Windows platform आकु जे कोनोसी प्लेटफॉर्म में व्यवहार करतबा बेले आकु केवल आमे कोन विंडोज प्लेटफॉर्म में व्यवहार कर परबा JDBC वर्क्स विथ रिलेशनल एंड नॉन रिलेशनल डाटाबेस ODBC वर्क्स विथ रिलेशनल डाटाबेस बुझला इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इट इज ए प्रोसीजरल बुझला तापर असला राइट आर्टिम एटा पिला माने फास्ट तार डेफिनेशन लिखाई छी राइट रो आर्टिम रो राइट रो काम होची एक्सट्रैक्ट द नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम ए स्ट्रिंग तापर आर्टिम फंक्शन रिमूव ट्रेलिंग ब्लैंक स्पेसेस आर ट्रिम हेले ट्रेलिंग ब्लैंक स्पेसेस एल ट्रिम हेले लीडिंग ब्लैंक स्पेसेस बुझला पिला माने तापर तार सिंटैक्स एग्जांपल दे दबो तापर असला प्राइमरी की फॉरेन की प्राइमरी कोन इट इज यूज्ड टू एंश्योर डाटा इन स्पेसिफिक कॉलम इन इज यूनिक इट इज ए कॉलम और बुक ऑफ कॉलम्स इन ए relational database table that provides a link between data in two tables it does not allow null values it can also contain null value ये कौन करे null value allow करे नहीं ये null value content करे बुझेला तबरे its value cannot be deleted from parent table its value can be deleted from child table only one primary key is allowed in a table एतर कोन मोर देन वन फॉरेन की इज अलाउड इन ए टेबल एतर केवल गोटे प्राइमरी की अलाउ है टेबल ले एतर मोर देन वन फॉरेन की अलाउ है टेबल ले इट इज यूनिकली आइडेंटिफाई ए रिकॉर्ड इन रिलेशनल डाटाबेस टेबल इट रेफर्स टू द फील्ड इन ए टेबल व्हिच इज द प्राइमरी की इन अनदर टेबल तब रसला टेक्स्ट बॉक्स चेक बॉक्स इट इज द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट इन HTML by which user can input a signal line or text at runtime a checkbox कोन it is the one of the form of a component in HTML by which user choose the number of items at the time of runtime माने जतले चलोतबो यूजर कोन करि परिबो चूज करि परिबो नंबर ऑफ आइटम्स को बुझि पेला तो HTML ले तापर इट अलाउस यूजर टू एंटर डिस्प्ले टेक्स्ट एत रहउची बाइनरी चॉइस तापर इट कैन बी यूज्ड फॉर सिंगल लाइन और मल्टी लाइन टेक्स्ट एंट्री ये कोन इट कैन बी यूज्ड फॉर अ सिंगल आइटम और फॉर लिस्ट ऑफ मल्टीपल आइटम तापर यार सिंटैक्स लिखिबो तार सिंटैक्स लिखिबो तापर असले 3G 4G इट स्टैंड्स फॉर थर्ड जनरेशन टेक्नोलॉजी फोर्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी मैक्सिमम अपलोड रेट होची 5 Mbps यार होची 50 Mbps यार मैक्सिमम डाउनलोड रेट होची 21 Mbps यार होची 1 Gbps Mbps माने होची मेगाबाइट पर सेकंड और Gbps माने होची गीगाबाइट पर सेकंड फ्रीक्वेंसी रेंज होची 1.8 गीगाहर्ट्ज टू 2.5 गीगाहर्ट्ज यार फ्रीक्वेंसी रेंज होची 2 गीगाहर्ट्ज टू 8 गीगाहर्ट्ज तापरे ये यूजेस करे पैकेट स्विचिंग टेक्निक ये यूज करे पैकेट स्विचिंग आउट होची मेसेज स्विचिंग हमर तीन प्रकार स्विचिंग टेक्निक अछि पैकेट स्विचिंग टेक्निक मेसेज स्विचिंग टेक्निक सर्किट स्विचिंग टेक्निक ये कौन करे ओनली पैकेट स्विचिंग टेक्निक को यूज करे ये कौन करे पैकेट स्विचिंग ता सहित मेसेज स्विचिंग टेक्निक को भी यूज करे तापर असला वेब ब्राउजर सर्च इंजन वेब ब्राउजर कोन इट इज ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज्ड टू लोकेट रिट्रीव डिस्प्ले तीन जिंस locate retrieve and display content on www our search engine कोन it is a special kind of website that helps us to find web page from other website बुझिला तब देखो पिला माने it allows accessing and displaying website it allows searching and operating website सेत्र कोन होए accessing और displaying website एतर कोन हबो
searching and operating website. तापर it stores the result on the device. It does not store the result on the device. A person requires a web browser to open search engine. गोटे पर्सन को वेब ब्राउजर टे दरकार कोन करिया पे सर्च इंजन ओपन करिया पे किंतु गोटे पर्सन को डज नॉट रिक्वायर फॉर ओपनिंग ए वेब ब्राउजर माने सर्च इंजन दरकार नै वेब ब्राउजर को ओपन करिया पे किंतु कोन वेब ब्राउजर दरकार कोन करिया पे सर्च इंजन ऑपरेट करिया पे ओपन करिया पे किंतु एतरे कोन हुए इट डज नॉट रिक्वायर फॉर ओपनिंग ए वेब ब्राउजर तो फास्ट वेब ब्राउजर होची मोजाइक फास्ट सर्च इंजन होची यांडेक्स प्लान ऑब्जेक्टिव मन रखिबो फास्ट वेब ब्राउजर हला मोजाइक फास्ट सर्च इंजन हला यांडेक्स तार मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउजर होची इंटरनेट एक्सप्लोरर मोजिला फायरफॉक्स आ मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन होची गूगल आर एग्जांपल देबो गूगल क्रोम सफारी ओपेरा मिनी यूसी ब्राउजर विभिन्न प्रकार दे परिबो यारला गूगल याहू बिंग बाइडू ए सब होची तार हमर सर्च इंजन एग्जांपल तापर आसला एलकेस माने स्ट्रिंग टाको स्मॉल लेटर रे कन्वर्ट करबा यूकेस माने अपर केस आ स्ट्रिंग टाको कैपिटल लेटर कन्वर्ट करिया आर सिंटैक्स होची एट दियाची एलकेस वैल्यू बा सिलेक्ट एलकेस एट म हेलो लिखि छी कैपिटल लेटर आ सबले मन रखिबो सबले सेमीकोलन दउथबो कॉलम सेमीकोलन दउथबो नले मार्क कटिबो आउटपुट रे एटा स्मॉल लेटर बाहर कला एतरा आउटपुट रे कैपिटल लेटर बाहर कला प्लान बुझी पालो ये थिला हमर 20 टी इंपोर्टेंट डिफरेंशिएट क्वेश्चन आ पिला मन कार कोन डाउट अछि की जार पिला मन जहा डाउट अछि पचरो पिलान कार कोन डाउट अछि पचरा हां आज अपलोड कर दो पीडीएफ पिला मन देखो लॉन्ग क्वेश्चन हमर देछि नेटवर्किंग चैप्टर रो हमर लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो नेटवर्किंग चैप्टर रो लॉन्ग क्वेश्चन गोटे आसीबो देछि नेटवर्किंग रो देखो गोटे होछि व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क तार टाइप्स ये गोटे लॉन्ग क्वेश्चन बा व्हाट इज टोपोलॉजी ब्रीफली डिस्कस अबाउट दिस टाइप्स ये गोटे लॉन्ग क्वेश्चन ए दिटा होछि पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चन जदि भी ताकू न पकेई हमर जदि ब्रीफली डिस्कस अबाउट नेटवर्किंग डिवाइस पकेला ताले हमें हब स्विच रे डिफरेंस पड़छे रिपीटर को 3 मार्क रे देछे राउटर गेटवे को भी 3 मार्क रे देछे तने भलो मार्क आराम रे रख करियो बुझि पेलो एतो गोटे लॉन्ग क्वेश्चन पाई गेलो सेमति ई बिजनेस रो हमर गोटे लॉन्ग क्वेश्चन पड़िबो तमरो व्हाट इज ई कॉमर्स ब्रीफली डिस्कस दिस टाइप्स एटा गोटे लॉन्ग क्वेश्चन हे परबो नले बेनिफिट सोशल इंपैक्ट चैलेंजेस दीटा जे कोनसी दीटा को कंबाइन करि गोटे लॉन्ग क्वेश्चन पाइबो एतो लॉन्ग क्वेश्चन पाइलो प्रोग्रामिंग रो देछि जाभा रो पड़िबो जो गोटे लॉन्ग क्वेश्चन जाभा रो हमरो पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चन होछि एक्सेस स्पेसिफायर आ होछि इनहेरिटेंस तार टाइप्स एक्सेस स्पेसिफायर तार टाइप्स ए दीटा प्रैक्टिस कर दबो तापर माई एसक्यूएल रो देछि पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चन गोटे पड़िबो आरडीबीएमएस रो डिफरेंट कमांड्स इन एसक्यूएल कमांड्स विभिन्न प्रकार जो एसक्यूएल कमांड सेटा गोटे लॉन्ग क्वेश्चन हे परबो नहले हमर कोटा नहले हमर आतर को कमिट रोल बैक पड़छि एथर को हमर जो अछि ट्रांजैक्शन तार एसिड प्रॉपर्टी एटॉमिसिटी कंसिस्टेंसी ड्यूरेबिलिटी इंटीग्रिटी जो एसिड प्रॉपर्टी ए चारटा भितरु ये कोन गला हमर आरडीबीएमएस रो ए दुटा क्वेश्चन गला ताले प्रोग्रामिंग रो दुटा लॉन्ग क्वेश्चन जानलो आरडीबीएमएस रो दुटा लॉन्ग क्वेश्चन ई बिजनेस रो दुटा लॉन्ग क्वेश्चन और नेटवर्किंग रो दुटा लॉन्ग क्वेश्चन एतरो तमर चारिटा क्वेश्चन तम पाइ जिवो तमर परीक्षा तीनटा करे अछि और देछि इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशन रो दुटा लॉन्ग क्वेश्चन पड़िबो से चैप्टर देखो आर्थर को विभिन्न प्रकार प्रोटोकॉल लॉन्ग क्वेश्चन पड़छि त से चैप्टर जदि इंपोर्टेंट मते कहबो से चैप्टर रो इंपोर्टेंट होछि इंटरनेट एड्रेसिंग आ गोटे होछि हमर इंटरनेट बैकबोन आ आईपी एड्रेस डिफरेंट क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस ए तीनोटे मुख्य अछि एत्ति के लॉन्ग क्वेश्चन पिला माने देखि दियो डेफिनेटली तमे लॉन्ग क्वेश्चन तीनटा रो अधिक पाइ जिवो जति कहली सेति भल से प्रैक्टिस करो बहुत भलो मार्क आसीबो
हाँ शॉर्ट नोट्स रे जहाँ सब देछि ताउ सब लिखिबो आउ कार कोन डाउट अछि कि पिला माने आमर 21 आईटी एग्जाम अछि हम 20 तारिख रे सबु जाक ऑब्जेक्टिव गोटी गोटी के डिस्कशन करबा ता सहित एब्रिविएशन सब प्रैक्टिस करे दा बुझियला पिला माने म एबे सेति पे करनी तुम भूली जिवो कारण परीक्षा पूर्व दिन गले तमरो डिस्कशन गले मन रहिबो तुम परीक्षा जे आराम रे कर परिबो आ कार कोन डाउट अछि कि ना लाइव सेशन को एंड करबा मार पीडीएफ एबे टेलीग्राम रे अपलोड कर देबे हां बायोलॉजी पे अपलोड करबा आगे आईटी एग्जाम टा पिला मानकर अछि आगे आईटी एग्जाम टा सर जाऊ तापर बायोलॉजी गैप भीतर डिस्कशन करबा आ कार कोन बुझियर अछि कि हम बायोलॉजी लाइव होबो हाँ आईटी क्लास काली इवनिंग रे होबो म आज डिफरेंशिएट क्वेश्चन रो पीडीएफ टा अपलोड कर दोची तो मान तक सब पढ़ी के रेडी कर दियो काली के शॉर्ट नोट सब डिस्कशन करबी मोर दिन को एमसीक्यू शॉर्ट नोट काली डिस्कशन करबा ये भी सब शॉर्ट नोट डिस्कशन होउची आ काली हमरो जो बाकी होउची 2 मार्क 3 मार्क क्वेश्चन ता सब डिस्कशन कर दवा पिलान आरो कार कोन डाउट अछि कि समस्त लाइव क्लास जॉइन करथिबारु समस्त को हृदय अशेष अशेष धन्यवाद समस्त भल से मन दे पटापड़ी करो जदि कार कोन डाउट अछि कमेंट माध्यम रे जणाओ आ समस्त को आईटी परीक्षा पे बेस्ट ऑफ लक हां काली जेमितल क्लास करबा ए इवनिंग रे हाँ से 2 मार्क खाली डिफरेंशिएट क्वेश्चन और शॉर्ट नोट आसे आ अलग के छछन पिला आ के कम पचारिबो कि समस्त पिला माने भल से पढ़ा पढ़ी करो बहुत गुटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जते क्वेश्चन प्रैक्टिस करिवो सेते मन रहइबो आ जहा जहा डाउट हबो कमेंट माध्यम रे जणाइबो ओके टुडे दिस मच थैंक यू हैव ए नाइस डे